সম্পূৰ্ণ গৃহসজ্জাৰ বাবে এক নাম একশ্যন টেছা কৈ নেহি এছা। টেছাৰ এক বিশেষ বাছ সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত। ষ্টুডিঅ' অন হুইলছত আছে টেছাৰ সকলো সামগ্ৰীৰ এক প্ৰদৰ্শনী। দেৱাল, ছাদ, ফ্ল'ৰ তথা আচবাবৰ ডেকৰেশ্যনৰ বাবে টেছাৰ বিশেষ প্ৰডাক্ট উপলব্ধ। HDMR পাৰ্টিকেল বোৰ্ড, MDF বোৰ্ড, HDF লেমিনেটেড ফ্ল'ৰিং, UV হাই গ্ল'জ বোৰ্ড আদি সকলো উপলব্ধ। গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ, যোৰহাট হৈ বাংগালুৰু যাব বাছখন। आप लोग आए और हम भी एक्शन टेसा से जुड़ा हुआ है करीब 10 साल से, 8-10 साल से, और प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। मतलब कोई ज़्यादा हाई रेट का भी नहीं है, कॉमन पीपल यूज़ कर सकता है। मतलब और HDMR जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। मतलब ये क्वालिटी जो है मतलब ट्राई के स्थान में इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत बढ़िया है और यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जो हमारे ग्रोथ पार्टनर्स हैं, मिस्टर अंकित जी राजस्थान लाइम से और मिस्टर आशीष जी ये अपना आशीष टेलर से, तो ये हमारे पैनल का काम करते हैं, सर हमारे फ्लोरिंग का काम करते हैं और दरवाजे का भी काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनको टेसा सलाम करूँगा। और ये जो हमारी बस आई है, हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। पूरी इंडस्ट्री के अंदर केवल हमारी ही कंपनी ये प्रमोशन कर रही है। इतनी बड़ी बस आपने देखा है ना, इसको हम लोग अभी पूरा भारत भ्रमण कर चुकी है और अब केवल उड़ीसा बाकी है। उड़ीसा के बाद ये बेंगलोर जाएगी। बेंगलोर में हमारा एग्जीबिशन है, वहाँ पर इसको रिनोवेट करके हम लोग दोबारा से खड़ा करेंगे। अभी हम लोगों ने फ़िलहाल में अजय देवगन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉयलो के लिए। तो अभी हमारी और ब्रांडिंग होगी, तो अगली बार जब आप बस को देखेंगे तो अजय देवगन का भी यहाँ पे काफ़ी सारे रूप देखेंगे। तो ये बस आपने जो क्वेश्चन किया कि हम लोग इस बस के द्वारा क्या कर रहे हैं, आज का ज़माना ब्रांडिंग का ज़माना है, अवेयरनेस का ज़माना है। तो ये बस का जो मेन पर्पस है, सोल पर्पस है, वो अवेयरनेस के लिए है। काम तो हमारे यहाँ पे 15 साल से चल रहा है, फ्लोरिंग का भी चल रहा है, डोर्स का भी चल रहा है और पैनल्स का भी चल रहा है। लेकिन एक जनरल आदमी, एक जो लेमैन है, जिसको कभी भविष्य में मकान बनाना है या मकान बन रहा है, उसके एक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये बस चलाते हैं। और ये हमारा जो आपने बोला आपको एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा के द्वारा, उसके अंतर्गत ही ये बस आता है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो बाकी कंपनी कर रही होती है, उल्टा हम वो काम करते हैं जिससे बाकी लोग हमारे एग्जाम्पल को फॉलो करें। तो ये बस इतना बड़ा बस, इसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, नीचे फ्लोरिंग भी लगा हुआ है, HMR भी है, बॉयलो भी है, मॉइस्ट मास्टर भी है, सभी है। तो ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रहे हैं और भी कोई नया डेवलपमेंट होता है वो भी इसके अंदर हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे हमारी जो कंपनी, पहले तो MDF तो एक जनरल कैटेगरी हो गई, लेकिन HDHMR और बॉयलो ये पूरे दुनिया में लाने वाले केवल हम लोग ही हैं। और आज हमको देख के बाकी कंपनियां भी लाने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन वो ला नहीं सकती क्योंकि जो क्वालिटी हम लोग दे सकते हैं वो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा है करके। आप लोगों के थ्रू मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अभी हमारी कंपनी, जैसा कि हम लोग बोलते हैं एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम और शुरू किया है कि जो भी लड़के, जो युवा लड़के, सपोज किसी कारपेंटर का भाई है या लड़का है या उनके जान पहचान का है, वो अगर स्किल्ड कारपेंटर बनना चाहता है तो हम लोग MSME के थ्रू उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसकी 3 महीने का ट्रेनिंग है। एक बार में 30 बच्चे हम लोग चुनते हैं, उनको उनका रहने खाने का, फीस का, पढ़ाई का, लिखाई का सारा खर्चा हमारा ही रहता है। उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके आधार पर उनको ये पहचाना जाता है कि वो लोग स्किल्ड कारपेंटर हो गए। अभी हमारा पहला बैच, जिसको हम लोगों ने सुपर 30 बोला था, वो निकल चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो सारे के सारे बच्चे, 30 बच्चे हमारे OEMs ने ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे नीलकमल करके, जो आप जानते होंगे, नीलकमल एक फर्नीचर की कंपनी है, उससे 11 बच्चे लिए हैं और बहुत ही शानदार पैकेज दिया है और उनके रहने का इंतजाम किया है। जबकि उन लड़कों की पढ़ाई मुश्किल से, कोई 12वीं था, कोई 10वीं पास था, एक इक्का दुक्का उसमें से ग्रेजुएट थे। तो एक हम लोगों ने एक रोज़गार का साधन भी हम लोगों ने ये देना शुरू किया, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर और शायद किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी ये काम नहीं करता कि MSME के थ्रू पढ़ाए बच्चों को और उनको नौकरी के लिए तैयार करे। वो सितारगंज हमारी जो प्लांट है
वहीं पर हम लोगों ने किया है वहाँ पर, लेकिन उनका कोई खर्चा नहीं आएगा। कैसे लगेगा? कोई भी कर सकता है, जैसे आपका कोई जान पहचान का है, आप हमारे यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको बताएंगे तो उसको हम लोग डाल देंगे। जैसे ही जब 30 बच्चे लेते हैं हम लोग, तो जैसे अगला बैच शुरू होगा उसमें उसको अपन ले लेंगे। उसको वहाँ रहना जाके रहना पड़ेगा और उसका सारा खर्चा, मतलब पढ़ाई का, किताब का, कॉपी का, पेन पेंसिल का, खाने पीने का, वो सब हमारा है और कोर्स का भी सारा पैसा हमारा है। उसके बाद उसको MSME से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसके बाद हम ही लोग नौकरी लगवाएंगे उसकी। मैं चाहता हूँ कि ये 2 शब्द हमारे अंकित जी भी बोले और 2 शब्द आशीष जी भी बोले। आज का प्रोग्राम का बारे में क्या बोलेंगे? बहुत बहुत ধন্যবাদ এক্সেণ্টেচা। ইমান যে কষ্ট হ'লে বাছখন আমি ইয়াৰলৈকে আনিবলৈ আমি গোটেই চেষ্টা কৰি যাতে ইয়াৰ মানুহখিনি প্ৰডাক্ট এৱেৰনেছ পায়। দুনিয়াৰ প্ৰডাক্ট আহিছে, ৰিভলিউচনেৰী প্ৰডাক্ট, গ্ৰীণ প্ৰডাক্ট আমি ক'ব পাৰোঁ, যিটো আজিৰ সময়ত বহুত দৰকাৰ। আমি অলৰেডি এজ ৰাজস্থান লাইম উদ্যোগ আমি যোৱা 15 বছৰৰ পৰা এক্সেণ্টেচাৰ লগত জড়িত আছোঁ। বহুতখিনি ফ্ল'ৰিঙৰ কাম আৰু এইখিনি আমি এক্সেণ্টেচাৰ লগত কৰিছোঁ। আজিলৈকে আমি বহুত ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিছোঁ। ভাল ভাল ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, হোটেল প্ৰজেক্টছত আমি ফ্ল'ৰিং লগাইছোঁ আৰু তাৰ ৰেছপন্স আজিলৈকে ভাল পাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আৰু প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু আমাৰ এইফালে মানুহবিলাকে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ সকলক যে আমাৰ মানে পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিলে আৰু মোৰ বাকী মোৰ ডিলাৰ্ছ আছে, অংকিতজি আছে, ছাৰ আছে মোৰ লগত আৰু কণ্ট্ৰেক্টাৰ আৰু বাকী ডিলাৰসকল ধন্যবাদ। আৰু এক্সেণ্টেচা আমাৰ কোম্পানীটো হৈছে বেচিকেলি বালাজী একশ্যন বিলৱেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত আহিছে আৰু আমাৰ ব্ৰেণ্ড নেম হৈছে এক্সেণ্টেচা। আৰু আপোনালোকে যিহেতু মোৰ ৰিপৰ্টাৰ বন্ধু এজনে কৈছিলে যে কিয়নো এই বাছখন অহা হৈছে, একচুৱেলি এইটো এটা মানে এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা হয় যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে খুব পিছপৰা হয়। আজি চাউথ বা নৰ্থত যিখিনি শেষ হৈ যায় তাৰপিছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত সেইটো এডেপ্ট হয়। যেনেকৈ আপুনি যদি ক'বলৈ যায় HDHMR, এতিয়া মানুহে গম পাইছে যে HDHMR কি বস্তু হয়। চ' সেই জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ কাৰণে এই বাছখন সকলো কাৰণে খোলা হয়। আমাৰ নৰ্মেল পাব্লিক যোনে ৰাস্তাইদি গৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা লোকেশ্যন লৈছোঁ যাতে সকলো কাৰণে এচেচেবল হয়, চবৰ কাৰণে খুব উজু হয়, তেওঁলোক আহি পিনে চাব পাৰে। আৰু আমাৰ প্ৰডাক্ট যেনেকৈ হৈ গ'ল, আমাৰ HDHMR আছে, HDHMR ডোৰ আছে। HDHMR হৈ গৈছে হাই ডেঞ্চিটি হাই মইশ্চাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। আকৌ কৈছোঁ আমি এইটো প্লাইউড ছাবষ্টিটিউট বুলি কৈ আছোঁ। প্লাইউডৰ কিয় ছাবষ্টিটিউট কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাইছে আজিকালি ডিফৰেষ্টেশ্যন মানে জংঘল কাটি আপোনাৰ খুব বেছি ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে, তাৰ ফলত আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে। আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট হয় আমাৰ এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি কৰা হয়, মানে আমাৰ প্লান্টেশ্যন হয়, যেনেকৈ চাহগছ আপোনাৰ প্লান্টেশ্যন কৰা হয়, ৰাবাৰ প্লান্টেশ্যন কৰা হয়, আপোনাৰ ধান লগোৱা হয়, তেনেকৈ আমাৰ আপোনাৰ এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি কৰা হয়। আমি প্লান্টেশ্যন কৰোঁ। ইকুৱেলিপ্টাছ আৰু পপুলাৰ বুলি 2জোপা গছ আছে, সেই কেইজোপা আপোনাৰ 6 বা 7 বছৰৰ পিছত এইখিনি কটা হয়। যেনেকৈ আপোনাৰ ধান কটা হয় চেম তেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰচিডিউৰতে কটা হয়। কাটি অনাৰ পিছত সেইখিনিয়েদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টখিনি বনোৱা হয়। চ' আমি কোনো ধৰণৰ জংঘল আমি এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ, এটা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি হয়। সেইটো কাৰণে সেইটো এটা পইণ্ট হয়। যিহেতু আমি এইটো খুব বেছি আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে HDHMR হওক বা বইলো হওক এইখিনি আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ প্লাইদি আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বাকী কি হয় ইন'ভেটিভ প্ৰডাক্ট হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ HDHMR হৈ গ'ল, সেইখিনি হাই ডেঞ্চিটি হাই মইশ্চাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তাৰ আপোনাৰ টু ছাম এক্সটেণ্ট আপোনাৰ ৰেটছো কম্পেৰেটিভলি আপোনাৰ প্লাইতকৈ কম হয়। আমি আপোনাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ নৰ্মেল পাব্লিকক, অকণমান কম দামত এটা বেটাৰ কোৱালিটি পায়। আমাৰ আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে বইলো বুলি কোৱা হয়, সেইটো বইলিং ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়, তাৰ ডেঞ্চিটি হৈ গৈছে 1000+। চ' সেইটো এটা প্ৰডাক্ট হয় যোনটো ফুল্লি ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়, FR গ্ৰেড হয়, ফায়াৰ ৰিটাৰ্ডেণ্ট আহে এইটো বস্তু, আৰু লগত ব'ৰাৰ আৰু টাৰ্মাইট প্ৰুফ। চ' সেইখিনি প্ৰডাক্ট কিছুমান আছে, যেনেকৈ আমাৰ ফ্ল'ৰিং আছে, আমি এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ ফ্ল'ৰিঙৰ ওপৰতে গোটেইখিনি। চ' সেইটো এটা ফ্ল'ৰিং হৈ গ'ল। আগতে আমাৰ চাইনিজ আমাৰ মোদীজীয়ে কৈ আছে যে লোকেল ফৰ ভোকেল। চ' সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট এটা হয়। আমি চাইনিজখিনিক আপোনাৰ বয়কট কৰি আমি বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ এইটো প্ৰডাক্ট আমি ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছোঁ। চাইনিজখিনি বেচিকেলি MDF হয়, মিডিয়াম ডেঞ্চিটি ফাইবাৰ ব'ৰ্ড হয়, আৰু আমাৰ এইটো HDF হয়, হাই ডেঞ্চিটি ফাইবাৰ ব'ৰ্ড হয় গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট। আৰু বাকী হৈ গৈছে আমাৰ হেড অফিচ হয় দিল্লী, আৰু আমাৰ প্লাণ্ট হয় আপোনাৰ চিটাৰগঞ্জ উত্তৰাখণ্ড, আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এৰাউণ্ড 5জন ডিলাৰ আছে, 8 গাঁৱত আছে। আমাৰ খুব ওচৰতে RLU হয়, ৰাজস্থান লাইম উদ্যোগে আমাৰ কাম কৰি আছে। আৰু বাকী আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টত আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে গোটেইখিনি নৰ্থ ইষ্ট আমি কেটাৰ কৰোঁ। আমাৰ আপাৰ আছামত অলমষ্ট 4-5টা ডিলাৰ আছে, লৱাৰ আছামতো তেনেকৈ আছে। চ' আমি বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰডাক্টখিনিয়ে মানুহক সহায় কৰে আৰু লগতে আপোনাৰ কম দামত এটা বেটাৰ প্ৰডাক্ট যাতে পাব পাৰে। এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো যিহেতু আপোনালোকে গুৱাহাটীত প্ৰদৰ্শন কৰিছে বাছৰ জৰিয়তে, আচলতে
এই মুহূৰ্তত কিমান দিনলৈকে থাকিব আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে আমি অকল আজিৰ দিনটো আছোঁ, যিহেতু আমি পৰহিলে আমি তেজপুৰত আকৌ আমি নেক্সট আপোনাৰ তেজপুৰত আমি কৰি আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি যোৰহাট গৈ আছোঁ। এদিনৰ প্ৰগ্ৰেমেই হয়, কাৰণ আপুনি ইমান ডাঙৰ বাছ এখনত গুৱাহাটী মাজমজিয়াত ৰখাবলৈ খুবেই দিগদাৰ হয়। আৰু ধন্যবাদ আমাৰ ট্ৰেফিক DCP ছাৰক যে তেওঁলোকে আমাক এইখন সুবিধা কৰি দিলে আৰু আমাৰ একদম খুব ওচৰতে আমাক এইটো সুবিধা কৰি দিছে যাতে আমি গোটেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। Stay informed, stay ahead. News NE 365.